Guys, we are starting today's learning and we are going to learn transitive and intransitive verbs. Transitive verbs and intransitive verbs. So you all know about the verb very well. Now we are moving to this topic. So we will be mixing up Sindhi and English because most of the basic learners won't understand English. So we are going to mix up both the languages. अॼु असांजी टॉपिक आहे ट्रांज़िटिव ऐं इंट्रांज़िटिव वर्ब्स. ट्रांज़िटिव वर्ब्स खे असां सिंधीअ में चवंदा आहियूं फ़ेल मुतअदी. First of all, we will define it. A verb which requires an object to complete its meaning. This is the definition of transitive verb. A verb which requires an object to complete its meaning. यानी अहिड़ो फ़ेल जंहिंखे मफ़ऊल जी ज़रूरत हुजे उनखे फ़ेल मुतअदी चइबो आहे. Just like example is I write. So this is a sentence but not the complete, because it does not convey the complete sense. We would definitely need a word that is called an object. If a verb needs an object, it is a transitive verb. Just like we can write, I write a lesson, I write a letter, I write a book. So write is a transitive verb because it does not complete its sense without a lesson. I write a book, I write a lesson, so it is a transitive verb. Transitive verb अहिड़ो फ़ेल हूंदो आहे जंहिंखे मफ़ऊल जी ज़रूरत हुजे. Now another example is we buy. What do we buy? We buy sugar. We buy a mobile set, we buy a pencil. So definitely we'll need something to buy to complete the sense. So it is a transitive verb. So how to know this verb is transitive or intransitive? So we have to know that how to recognize an object. We have two questions, what and whom. So object can be a thing or object can be a person. Object can be a person, just like they love their children. The question is, whom do they love? उहे कैसा प्यार कनि था? They love their children. It means that this is an object. Object खे मालूम करण जा ॿ सवाल आहिनि, हिकु वाट, ॿियो whom. जेकॾहिं इन जो जवाबु तव्हांखे मिले थो जुमिले में त पोइ उहो ट्रांज़िटिव वर्ब आहे. मां लिखां थो, छा थो लिखां? सबक. छा? What do I write? I write a lesson. माना जे जवाब मिले थो त माना इहो ट्रांज़िटिव वर्ब आहे. We buy sugar. What do we buy? Sugar. माना जे जवाब मिले थो त यानी इहो ट्रांज़िटिव वर्ब आहे. They love their children. Whom do they love? Their children. माना जेकॾहिं जवाब मिले थो, ॿ सवाल आहिनि ऑब्जेक्ट खे मालूम करण जा. ट्रांज़िटिव वर्ब तव्हांजो हिननि ॿिनि सवालनि मां मालूम थींदो. वाट जो सवाल पुछण सां ऐं whom जो सवाल पुछण सां त इहो ट्रांज़िटिव आहे. Now we are moving intransitive verbs. Intransitive verbs कहिड़ा आहिनि? A verb which does not require
an object to complete the sense. अहिड़ो फेल जंहिंखे मफ़ऊल जी ज़रूरत न हुजे. ट्रांज़िटिव कहिड़ो फेल जंहिंखे मफ़ऊल जी ज़रूरत हुजे. इंट्रांज़िटिव अहिड़ो फेल जंहिंखे मफ़ऊल जी ज़रूरत हुजे न हुजे. ऐं मफ़ऊल सां कहिड़नि ॿिनि सवालनि खां मालूम करे सघूं था. हिकु वाट सां, ॿियो हूम सां. जेकॾहिं उन्हनि जो जवाबु अचे थो त उहो ट्रांज़िटिव आहे. जेकॾहिं उन्हनि जो जवाबु नथो अचे त उहो इंट्रांज़िटिव आहे. जीअं I sleep at night. मां राति जो सुम्हां थो. तव्हां ॿई सवाल पुछी ॾिसो. छा थो सुम्हां? जवाबु ईंदो कोई? What do I sleep? कोई जवाबु न ईंदो. इन जे करे इहो छा आहे? इंट्रांज़िटिव आहे. ॿियो मिसाल, They cry in the room. उहे कमरे में रोअनि था. They cry in the room. What do they cry? उहे छा था रोअनि? ईंदो जवाबु? न ईंदो. जेकॾहिं नथो अचे जवाबु वाट ऐं हूम सां त यानी हिन में मफ़ऊल कोन्हे. मफ़ऊल कोन्हे यानी ऑब्जेक्ट कोन्हे. हिनखे ज़रूरत कोन्हे ऑब्जेक्ट जी. जॾहिं ज़रूरत न आहे त उहो कहिड़ो वर्ब आहे? Intransitive verb. Do you understand? Yes. If a verb needs an object to complete the sense, it is a transitive verb. And if a verb does not require any object to complete the sense, it is an intransitive verb. How to know about the subject? We have two question words, what and whom. When we get the answer with these questions, it means that it is a transitive verb. And if we don't get any answer with these two words, it means it is an intransitive verb. Now it is clear? Yes. Now, कोई भी verb, कुछ verbs अहिड़ा आहिनि जेके ट्रांज़िटिव ऐं इंट्रांज़िटिव ॿिन्ही जो रोल अदा कंदा आहिनि. यानी जीअं असां फ्लाई था खणूं त फ्लाई ट्रांज़िटिव तौर बि यूज़ थींदो आहे ऐं इंट्रांज़िटिव तौर बि यूज़ थींदो आहे. इहो कॉन्टेक्स्ट ते थो डिपेंड करे त कहिड़े कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमालु थियल आहे. सपोज आई फ्लाई अ काइट. व्हाट डू आई फ्लाई अ काइट? जवाबु अचे थो यानी कहिड़ो वर्ब आहे? ट्रांज़िटिव. ट्रांज़िटिव माना हिनखे मफ़ऊल जी ज़रूरत आहे. द प्लेन flies in the air. जहाज हवा में उॾामे थो. What does it fly? जवाबु अचे थो? जवाबु अचे थो? नथो अचे. मफ़ऊल जो जवाबु नथो अचे. वाट जो जवाबु नथो अचे यानी कहिड़ो आहे? इंट्रांज़िटिव वर्ब. यानी इहा शइ बि क्लियर थी वई त कोई बि वर्ब ज़रूरी न आहे. मोस्टली जेके आहिनि हिकिड़ा ट्रांज़िटिव वर्ब्स हूंदा आहिनि, हिकिड़ा इंट्रांज़िटिव वर्ब्स हूंदा आहिनि. पर काफ़ी वर्ब्स अहिड़ा बि हूंदा आहिनि जेके ट्रांज़िटिव तौर बि कमु ईंदा आहिनि ऐं इंट्रांज़िटिव तौर बि कमु ईंदा आहिनि. जीअं ॿियो मिसाल, आई स्टॉप द कार आउटसाइड. व्हाट डू आई स्टॉप? व्हाट डू आई स्टॉप द कार? छा थो रोकियां? कार थो रोकियां. यानी जवाबु आयो कहिड़ो वर्ब थियो? ट्रांज़िटिव वर्ब थियो. द कार स्टॉप्स एट द बस स्टैंड. व्हाट डज द कार स्टॉप? व्हाट डज द कार स्टॉप? अचे थो जवाबु? नथो अचे. यानी हिते स्टॉप छा आहे? इंट्रांज़िटिव वर्ब. यानी अहिड़ा वर्ब्स बि थींदा आहिनि जेके ट्रांज़िटिव तौर बि कमु ईंदा आहिनि ऐं इंट्रांज़िटिव तौर बि कमु ईंदा आहिनि. So we are going to conclude the topic transitive and intransitive verbs. Transitive verbs are those verbs which require an object to complete the sense. And intransitive verbs are those verbs which do not require any object to complete the sense. Some verbs are transitive and some are intransitive. But some of the verbs are both transitive and intransitive. How to know whether it is transitive or intransitive? We should know about the object, and object can be found out with these two questions, what and whom.
what and whom. If we get the answers with these questions, it means it is a transitive verbs. If we don't get the answer of these questions, it means that it is an intransitive verb. So we have also learned about active voice and passive voice. Have you learned? Active voice and passive voice. जेकॾहिं असां हिननि जी सिंधीअ में माना कंदासीं त हे थींदो फेल मुतदी मरूफ ऐं हे थींदो फेल मुतदी मजहूल. फेल मुतदी मरूफ ऐं फेल मुतदी मजहूल. ट्रांजिटिव वर्ब्स जी सिंधीअ में माना छा कई से फेल मुतदी. It means that active voice also has two parts. Transitive verbs also have two parts, active voice and passive voice. Transitive verbs. So we can say that transitive verb has two types also, active voice and passive voice. यानी हिन मां इहा शइ साबित थी त जंहिंजो जेको वर्ब ट्रांजिटिव हूंदो यानी जंहिंखे मफ़ऊल हूंदो त उनजो एक्टिव ऐं पैसिव थींदो. यानी जेको इंट्रांजिटिव हूंदो उनजो पैसिव न थींदो, उहो हिकिड़ी फॉर्म में हूंदो. जेको बि हूंदो हिकिड़ी फॉर्म में हूंदो. जेकॾहिं हिनखे असां पैसिव कंदासीं त छा थींदो? A lesson is written by me. यानी हिन जो पैसिव थींदो छो त हिन में मफ़ऊल आहे, ट्रांजिटिव आहे. We buy sugar. Sugar is bought by us. यानी हिन जो पैसिव थींदो. छो थींदो त इहो ट्रांजिटिव आहे. They love their children. छा थींदो? Their children are loved by them. पैसिव थींदो. छो थींदो त इहो ट्रांजिटिव आहे. यानी ट्रांजिटिव जो एक्टिव ऐं पैसिव थींदो आहे. इंट्रांजिटिव जो कोई पैसिव न थींदो आहे. Why? Because it has no object. We can't make intransitive verb into passive voice because it has no object. Just like I go to school. My school वञा थो. What do I go? अचे थो जवाब. मां छा थो वञा? जवाब अचे थो? नथो अचे. यानी हिन में मफ़ऊल कोन्हे. यानी हे कहिड़ो वर्ब थियो? इंट्रांजिटिव वर्ब थियो. जॾहिं बि इंट्रांजिटिव वर्ब अचे यानी हुनजो पैसिव न थींदो. यकदम लिखो नो पैसिव. हिकिड़ा छा कंदा आहिनि हिनखे? द एक्शन ऑफ गोइंग टू स्कूल इज डन बाय मी. हिकिड़ा वरी पैसिव ईअं कंदा आहिनि जेको कंहिं बि रूल में नथो अचे छो त आहे इंट्रांजिटिव वर्ब, इन जे करे पैसिव न थींदो. माना पढ़ो फेल मुतदी मरूफ ऐं फेल मुतदी मजहूल. फेल मुतदी कहिड़ो आहे? ट्रांजिटिव आहे. यानी जंहिंमें मफ़ऊल हुजे. हिन में मफ़ऊल ई कोन्हे. हाणे पैसिव में छा थींदो आहे? जेको वर्ब हूंदो आहे हुनजी कहिड़ी फॉर्म पवंदी आहे? थर्ड फॉर्म पवंदी आहे. जीअं लेसन इज रिटन यानी राइट जी थर्ड फॉर्म पई. हिन में वर्ब कहिड़ो आहे? गो. कहिड़ो आहे? गो. हिन में इज़ गान पई आहे? इज़ गान आहे? न आहे. इज़ डन आहे. डू त हिन में मिलियल ई कोन्हे. इन जे करे इंट्रांजिटिव वर्ब जो कोई पैसिव न थींदो आहे. ट्रांजिटिव वर्ब जो ई पैसिव थींदो आहे. यानी ट्रांजिटिव वर्ब खे जेकॾहिं अञा असां एक्सप्लेन कयूं त हिन जा ॿ पार्ट्स आहिनि. हिकिड़ो एक्टिव वॉइस, ॿियो पैसिव वॉइस. यानी जंहिं फेल में मफ़ऊल हूंदो उनजो एक्टिव वॉइस थींदो. जंहिं फेल में मफ़ऊल न हूंदो उनजो पैसिव वॉइस न थींदो. यानी इंट्रांजिटिव वर्ब हैज़ नो पैसिव and transitive verb has passive voice because it has an object to complete the sense. So this was all about transitive and intransitive verbs. We learned very well that transitive verbs can be divided into two parts further, active voice and passive voice, because transitive verb has an object to complete the sense and we can convert it into passive voice. And intransitive verb has no object, so we can't convert it into passive voice. So did you learn it very well? Okay.